हेलो एवरीवन जो मैंने भी लाइव अच्छे कमेंट सेक्शन रे हाय मेसेज करंतु। हाय ओडिशा जीके को कवर करिया पई मु एबे जो बुकटा पढुची सेटा आरिहांट्रो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 5000 एमसीक्यू एटी कवर अप ହେଇଛି तो मु एबे कवर करूची एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा तो हम डिस्कशन करिया जो मैंने भी लाइव अच्छा तो मुझे गोटे गोटे क्वेश्चन आपको कहूँ सहित ऑप्शन मेंशन करेंगे तो आंसर कमेंट सेक्शन रे जणेबे जो मैंने भी लाइव अच्छा हाई कर दिंतु कमेंट सेक्शन ताकि मुझे जानीपरि को मैंने मो सहित पार्टिसिपेट कर तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा एज मेंशन्ड इन द हिस्टोरिकल टेक्स्ट उत्कल कलिंग ओड्र एंड ऑल ऑफ दिस तो जमती आम जानी एंशिएंट पीरियड रे ओडिशार ना उत्कल थिला कलिंग भी थिला ओड्र ट्राइब्स ओडिशा रे रहुतले तो सेति ताको ओड्र देश भी कहा जाउतला तो ऑप्शन ए बी सी तीनटा करेक्ट अछि तो आंसर हो ऑल ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड एसोसिएटेड विथ ओडिशा ओडिशा को नेकी को वर्डटा एसोसिएटेड नुह ऑप्शन ए है उत्कल महाकांतार ओडिभिसा ताम्रलिप्त तो ओडिशार ना सहित कोटा एसोसिएट नुहे तो आंसर हम ताम्रलिप्त थर्ड रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द नेम ओडिभिसा फॉर ओडिशा महावंश दीपवंश चोल कलिंग जातक कलिंग बोधि जातक तो आंसर है दीपवंश which name was used for Odisha in some historical texts like Tariki Nasiri and Tariki Firozshahi तो तारिकी नसीरी एंड तारिकी फिरोजशाही ये दुटा जाक कौन मेंशन होती ओडिशा साउथ कोसला कमला मंडल एंड जाजनगर तो आंसर टी हूँ जाजनगर
Which ancient epic makes the earliest reference to Kalinga and Odro, mentioning its sacred rivers Baitarani and goddess Viraja? से कौची को ancient epic रे ओडिशार अर्लीएस्ट ना मेंशन रही कलिंग और उड्र. ऑप्शन है रामायण महाभारत कपिल संहिता प्राची महात्म्य. आंसर है महाभारत. 6 number question है which of the following Puranas mention कलिंग and उत्कल. कलिंग और उत्कल ये तीटा ना को पुराण रे मेंशन रही वायु पुराण मत्स्य पुराण भागवत पुराण एंड ऑल ऑफ द अबव. तो तीन जाक मेंशन रही तो आंसर हम ऑल ऑफ द अबव. In which part of the Mahabharata is Kalinga described? कलिंग महाभारत रो को पार्ट रे डिस्क्राइब हेछि. तो कलिंग महाभारत हमर आदि पर्व रे मेंशन रही. Which ancient Indian epic mentions Dantapur as the capital of Kalinga? दंतापुर को कैपिटल ऑफ कलिंग बोली को एंशिएंट एपिक रे मेंशन करा जायछि. रामायण भागवत गीता महाभारत और ऋग्वेद. आंसर है महाभारत. Which literary source mention the religious conditions of ancient Odisha and is written by a Chinese pilgrim? तो को Chinese pilgrim ओडिशा रो रिलीजियस कंडीशन ऊपर लिटरेरी सोर्स रे मेंशन करथिले. बैताल पासिकी मंडल पांजी हरिवंश पुराण गोटे है सीयुकी. तो आंसर है आमर सीयुकी. तो सीयुकी किए लिखिथिले मन रखिथांते. सीयुकी आमर लिखिथिले हाइवेन सांग. तो हाइवेन सांग ओडिशा को आसथिले 638 और 639 एडी रे. तो ए जो सब क्वेश्चन गुडा रहला ओडिशा जीके जो माने भी ओएसएससी जेल दउचंती क्यू ट्रिपल एस आरआई अमिनो आईसीडीएस केएलटीआर ए सब एग्जाम दउचंती. ओडिशा रे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण दियंतु सबथरे ओडिशा जीके रो वेटेज अधिक. ओडिशा जीके भीतर ओडिशा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ओडिशा पॉलिटी इकोनॉमिक्स रे आपण बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे और हमर ओडिशा ज्योग्राफी कवर अप होची. तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री रो पार्ट को पूरा देखिबा. Who discovered the famous Paleolithic site at Kulina in Odisha? Paleolithic site ओडिशा रे किए डिस्कवर करथिले कुलिना रे? वैलेंटिन बाली परमानंद आचार्य देवला मित्र श्री माधवपुर महाविहार. तो आंसर है देवला मित्र. पालियोलिथिक साइट कुलिना रे ताकू हमर डिस्कवर करथिले देवला मित्र. What archaeological discovery in Dhauli and Jowgada provided information about Kalingan history in 3rd century BC? तो जितेबाला धौली आ जौगड़ कथा आसो तो आप सब मन रखिए अशोका पीरियड कथा. तो अशोकर रॉक एडिक्टिटी देखा जाता. तो आंसर हम अशोकान रॉक कट. Which archaeological site in Odisha has yielded information about the prehistoric period? Prehistoric period उपरे ऑप्शन है रत्नगिरी धौली जौगड़ गुड़हांडी. तो आंसर है हमर रत्नगिरी. Which place in Odisha is known for its Jain caves? जेतले Jain caves रो कथा आसे सबले मन रखिथांते. आंसर हम उदयगिरी और खंडगिरी. What were Udayagiri and Khandagiri cave near Bhubaneswar used for during the 2nd century BC? तो क्वेश्चन कला कि उदयगिरी खंडगिरी जो केव्स गुडा अछि भुवनेश्वर रे 2nd century BC रे सेटा कोन जस्टिफाई करथिला. ऑप्शन ए हैला फोर्टिफाइड सिटी. ऑप्शन बी हैला जैन मॉन्क्स रेसिडेंस. ऑप्शन सी हैला बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. ऑप्शन डी हैला मैरीटाइम एक्टिविटीज. तो आंसर हैला जैन मॉन्क्स रेसिडेंस. जैन मानकर रहिया पई हमर खंडगिरी और उदयगिरी रे कोन कराइतला से केव्स गुडा को बनाइतला. तो ये जो खंडगिरी उदयगिरी केव्स टा हमर हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे देखा जाय. आ हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन कहले आपण मन रखिबे ऐर खारवेळंग कथा महामेघवान डायनेस्टी. The numerous caves on the Udayagiri and Khandagiri hills of Odisha testify to the. तो उदयगिरी खंडगिरी हिल्स रे जो केव्स गुडा अछि सेटा कोन टेस्टिफाई करूची. ऑप्शन ए हैला कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस ऑफ द जैन फेथ इन ओडिशा. ऑप्शन बी पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म इन ओडिशा. एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन ओडिशा. Ashoka made special contribution to the ancient art of Odisha. The answer of a continued existence of the Jain faith in Odisha. Which of the following coins suggests that trade and commerce existence in Odisha? तो को टाइम रो कॉइन को देखले जाना पड़े कि ओडिसा रे से टाइम रे ट्रेड एंड कमर्स प्रैक्टिस होतला. ऑप्शन है पुरी कोसाण कॉइन्स नळ कॉइन्स पंचमार्क कॉइन्स और हमरो गुप्त कॉइन्स. तो फास्ट हमरो ट्रेड और कमर्स को जति देखिबा ताले गुप्त कॉइन्स रो माने जानि परिबा. In Odisha, which Ashokan edict has been found? ओडिशा रो कोठी अशोकांकर रॉक एडिक्ट हमरो देखा जायथाय. तो एटा निहाते पर आगुर हम ऑलरेडी क्वेश्चन भी पढी जे धौली और जौगड़ ए दीटा जिंस. तो बोथ धौली और जौगड़ आंसर हो. Which places was a fortified city that served the purpose of Ashoka's administration? Fortified city रो कथा जेताबेले आसीबो fortification हितला अशोकांक पीरियड रे जौगड़ रे. Which of the following places is known as Diamond Triangle? Diamond Triangle माने हला हमर रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी. मन रखिबेटा हला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. Identify copper plates that tells about the early history of Odisha. Copper plate inscription हमर तालचेर हिंदोळ और ढेंकानाल ए तीनटा जगह देखा जायतला.
What did Devalamitra's major excavation at Ratnagiri reveal? तो देवलामित्रଙ୍କର excavation ହେଲା ରତ୍ନଗିରିରେ ସେଟା କ'ଣ reveal କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା Paleolithic tools, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା Buddhist monasteries and stupas, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା Jain relics, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା iron elements. ତ ଦେବଳାମିତ୍ର ମାନେ ସେଟା ହେଲା ଆମର Paleolithic periodରେ ସେ excavation କରିଥିଲେ. So who conducted exploration in 1875 at Angul, Talcher, Dhenkanal and Bursapalli exposing prehistoric sites in Odisha? तो हिस्ट्री रा हमर टू पार्ट था गोटे हला प्री हिस्टोरिक पीरियड आ गोटे हला हिस्ट्री गोटे हला प्री हिस्ट्री गोटे हला हिस्ट्री जो टाइम रे हमर राइटिंग नथिला से पीरियड हला हमर प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑप्शन हला एटी परमानंद आचार्य ऑप्शन बी वैलेंटाइन बॉल दयाराम साहानी देवला मित्र तो देवला मित्र हमर हते थिले हम पढिथिले गोटे क्वेश्चन थिला या पूर्व हमर कुलिनारे पैलियोलिथिक साइट्स को एक्सकवेशन करथिले तो 1875 रे मन रखंतु अनुगुल तालचेर ढेंकानाल और बुर्सापल्ली यार जो एक्सकवेशन हेतला एटा वैलेंटाइन बॉल करथिले. What did the excavation at Manikapatna provide information about? Manikapatna रे जो excavation गुडाक थिला सेटा कोन information provide करे? ऑप्शन ए हैला military forts, ऑप्शन बी हैला maritime activities and economic life, early Odisha politics and religious rituals. आंसर एठी हम maritime activities and economic life. What do the copper plates found at Talcher, Hindol, Dhenkanal tells us about? तो Talcher, Hindol और Dhenkanal रे जो हमरो copper plate गुडाक देखा जाए सेटारे कोसरे कोन एक्सप्रेस करे? मैरिटाइम एक्टिविटी ना ancient trade route, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ओडिशा और गोटे हमरो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. तो मन रखितो तालचेर हिंदोल ढेंकानाल जेहेतु हमरो प्री हिस्टोरिक टाइम को बिलोंग करथिला सेई टाइम रे जो एक्सकवेशन हेतिला की करथिला हमें भी पढले वैलेंटिना बॉल. तो आंसर एठी जेबो कोन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ओडिशा. Who was the first historian to undertake excavations at Sisupalgarh? Sisupalgarh रे किए हमर excavation करथिले? ऑप्शन होची आर एस शर्मा, ब्रजवासी लाल, बी आर मणि आ गोटे हला हमर रखलदास बंदोपाध्याय. तो मन रखि दांतो शिशुपालगढ़ माने हला ब्रजवासी लाल. Sisupalgarh is an ancient archaeological site located in which region of Odisha? Sisupalgarh टा हमर को स्टेट रे आसुची से क्वेश्चन पचारिची. तो Sisupalgarh हला हमर भुवनेश्वर अछि त माने ओडिशा स्टेट हबो. Of which historical period is associated with the site of Sisupalgarh? Vedic period, Mauryan period, Indus Valley civilization, आ गोटे हला ऑप्शन अछि हमर गुप्त period. त आंसर हला हमर Mauryan period को शो करे Sisupalgarh टा. In which year was the excavation of Sisupalgarh led by Brajvasi Lal conducted? तो ब्रजवासी लाल हमर केबे करथिले Sisupalgarh रे excavation टा हला 1949 रे. What are the earliest examples of inscription in Odisha? Earliest example कौन है inscription? Pictographs, copper plates, stone pieces, आ गोटे हला temple walls. आंसर हला earliest excavation कते से कहउछ माने से हला हमर pictographs. Where are the pictographic inscriptions such as Bikram Khol and Budahandi rock at sites found in Odisha? Bikram Khol ଆଉ Budahandi ए दिटा rock जो pictographic inscription rock site हमरो कोठी देखा जाए. ऑप्शन से कहछि गजपति, नुआपड़ा, संबलपुर, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आ हला पुरी डिस्ट्रिक्ट. तो मन रखितंतु बिक्रम खोल टा हला हमरो संबलपुर रे आ गुडाहांडी टा हला कलाहांडी रे. Name the two Ashokan edicts that are the earliest epigraphs of the pre-Christian era found in Odisha. तो अशोकांकर जो एडिक्ट अछि प्री क्रिश्चियन एरा एटा कोडी फाउंड हेतला धौली जौगड हाथी गुम्फा एंड भद्रा इंस्क्रिप्शन नीनगोन ग्रांट एंड तीर्थापुर ग्रांट इंस्क्रिप्शन आ हला आसानपट स्टोन एंड नारला ग्रांट इंस्क्रिप्शन. मन रखितो अशोका माने हला धौली आ जौगड. Which of the following inscription provide early history of Odisha? हाथी गुम्फा inscription, भद्रा inscription, आसानपट stone inscription तीनटा जाक देखा होतला हमर ओडिसा रे. तो all of the above आंसर. Which of the following is the earliest type of coin discovered in Odisha? हां सबुठु earliest coin हला हमर जोटा हला सेटा हला पंचमार्क coin. Punchmark coin found in Odisha have punchmark of various symbol. Which of the following is not a typical punchmark? को इमेज रो पंचमार्क नथिला से पचारछि. सन, एनिमल, ट्री आ किंग. तो मन रखि दनी पंचमार्क कॉइन माने सेटा हमरो सबले एनिमल, प्लांट एमानकर पिक्चर सेठी देखा जाउतला. तो कोडा नथिला त आंसर हबो किंग्स. During which time period were पंचमार्क coins in circulation in Odisha? ओडिसा रे पंचमार्क कॉइन टा केबे सर्कुलेट हेतिला? तो आंसर हबो 4th century BC to 4th century AD. The Puri Kusana coins were in circulation during which period in Odisha? Odisha रे Puri Kusana coin टा को टाइम रे हमरो चलीतिला. तो 1st to 3rd century AD पर्यंत एटा हमरो चलतिला.
Which of the following coins throw light on the Nala rule in South Kosala of 5th through 6th century AD? Nala ruler का time रे obviously Nala ruler अच्छी माने ताले Nala coins ही चालू थे वो. Who was ଅର୍ଥପତି known from a copper plate inscription and coin? ତ ଗୋଟେ ଜାଗାର copper plate inscription ରେ ଅର୍ଥପତି ୱାର୍ଡଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି. ତ ଅର୍ଥପତିର ମିନିଂ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଅର୍ଥପତି କାହାକୁ କନସିଡର କରାଯାଉଛି? ଗୁପ୍ତ ରୁଲର, ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ କିଙ୍ଗ, ନଳ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କୁଷାଣ ରୁଲର. ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହେବ ନଳ କିଙ୍ଗ. ଅର୍ଥପତି ହେଲେ ନଳ କିଙ୍ଗ. ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ସ ୱେର୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ? ଯୋଉ ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ଟା ସେଇ ଟାଇମରେ ବନା ହଉଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆମର କୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ବନା ହଉଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ସିଲଭର. Which of the following is the typical Odisha style of architecture? तो ଆମର टेम्पल आर्किटेक्चर को जदि आमे देखिबा हमर इंडिया रे नॉर्थ स्टाइल रो अलगा टेम्पल आर्किटेक्चर तापर हमर साउथ रे द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर. तो ओडिसा रे हमर गोटे स्पेशल टाइप रो टेम्पल आर्किटेक्चर देखा जाय ताको हमें कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर कहंती. तो जोठी आपण देखिबे जो हमर जेमति जगन्नाथ मंदिर हैला, लिंगराज मंदिर हैला तो रेखा देउळ ताको कहंती. तो तारो से कोची को स्टाइल तारो कर्विलिनियर, रेक्टिलिनियर, द्राविडियन आ गोटे नागर. आंसर हम कर्विलिनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है which group of temples marked the early phase of temple architecture in Odisha including लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर एंड शत्रुघ्नेश्वर? ये जो लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर और शत्रुघ्नेश्वर टेम्पल टा एटा हमर को ग्रुप को बिलोंग करथला? चालुक्य ग्रुप, पल्लव ग्रुप, प्रतिहार ग्रुप और भौम ग्रुप. आंसर हम हमर भौम ग्रुप. Which of the following temples in Odisha contains sculptures that provide information about the secular and religious history of the region? कुछ को टेम्पल टा इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे जोटा कि हमरो सेक्युलर और रिलीजियस हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करे ओडिसा रो. ऑप्शन देछि लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क, केदारनाथ टेम्पल आ गोटे हमरो रामेश्वरम टेम्पल. तो केदारनाथ टेम्पल और रामेश्वरम टेम्पल त हम ओडिसा रे नाही. तो ए दुटा ऑप्शन एलिमिनेट हे गला. बाकी रहला लिंगराज और सन टेम्पल. तो जदि से कहूछि सेक्युलर आइडेंटिटी ताले आंसर हो हमरो Sun Temple. Next question है the Kalinga style architecture also known as? Kalinga style architecture को कौन कहती? रेखा स्टाइल, पाड़ स्टाइल, शिखर स्टाइल और हमरो कलिंग स्टाइल. तुम जेंति पूर्व कही एक्सप्लेन करथिले त कोन कोन कहते रेखा देउळ. रेखा देउळ माने आगो तार कोन थिबो गोटे स्ट्रक्चरटा होची टेम्पल रो भोग मंडप, तापर हैला हमरो जगमोहन नाट्य मंडप, नाट्य मंडप पर जगमोहन, जगमोहन पर हमरो जोटा गर्भगृह हम कहते जोटी मेन डेटिस रुहंती हमरो जे मुख्य देवता जो रहंती जोटा हम गर्भगृह बोली कहंती ताकू कहंती हमरो रेखा देउळ. Which of the following is the oldest temple in Odisha? ओडिसा रो टेम्पल स्ट्रक्चर भितरे जते गुडे टेम्पल अछि ता भितरे सबटा हमरो ओल्डेस्ट टेम्पल कोटा? ऑप्शन अछि हमरो लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल आ गोटे हमरो मुक्तेश्वर टेम्पल. तो कोन हो आंसर हमरो लिंगराज टेम्पल. 11th सेंचुरी रे तो जजाति केसरी याको बनेथिले. सोमवंशी डायनेस्टी जजाति केसरी याको बनेथिले. Which of the following temples is not located in Bhubaneswar? तो चारिटा ऑप्शन देछि कोणार्क सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और राजारानी टेम्पल. से कहिछि या भितर को टेम्पलटा हमरो भुवनेश्वर रे नाही. तो कोन हो आंसर कोणार्क सन टेम्पल तो कोणार्क पुरी रे अछि. फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी. जगन्नाथ टेम्पल को नेकी से किछटा डाटा देछि ता भितर से कोटा करेक्ट बोली क्वेश्चन पचारिछि. इट इज वन ऑफ द 4 चारधाम पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदुइज्म. एटा तो करेक्ट. हमर चारि धाम भितर गोटे धाम हैला जगन्नाथ धाम. इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण ऑब्वियसली. तो जगन्नाथ होचंदी कृष्णकर से स्वरूप. तो एटा भी करेक्ट हो. इट इज अ टॉलेस्ट टेम्पल इन ओडिशा. टॉलेस्ट टेम्पल रो स्ट्रक्चर जदि हम कहबा टॉलेस्ट नुह तो ऑप्शन ए और बी हैला हमर करेक्ट. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राजारानी टेम्पल इन भुवनेश्वर. भुवनेश्वर जो राजारानी टेम्पल अछि ना तारो रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कोटा पचारिछि. इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट बाय ए क्वीन इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड. एटा करेक्ट. रेड आ येलो सैंडस्टोन रे हमर बना हेतिला राजारानी टेम्पल. आ यार खासियत हला कि राजारानी टेम्पल रे केही डेटी माने कि ठाकुर नाहंती, प्रेजाइडिंग डेटी के नाहंती. इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. एटा हमर dedicated to Lord Vishnu nuhata. It is a 11th century temple. 11th century temple आ गोटे देछि हमरो all of the above. तो आंसर इटे मन रखितांतो राजारानी टेम्पल ऊपर आंसर हैला हमरो इट इज ए 11th century temple. सोमवंशी डायनेस्टी टाइम रे बना हेतिला. यार ई भितरे कोनोसी देवा देवी नाहंती. आ गोटे हैला हमरो रेड आ येलो सैंडस्टोन रे आकु बना हेतिला. आ गोटे हैला सबुट इंपोर्टेंट फैक्ट राजारानी टेम्पल को हमरो ओरिजिनली या ना थिला इंद्रेश्वर टेम्पल. मन रखिथिबे एटा.
Which among the following Odisha type Nagara style temple are founded Bhubaneswar? Nagara style माने ହେଲା एमती कर्विलिनियर ହେଇକି ଥିବ जगन्नाथ टेम्पल लिंगराज टेम्पल सन टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल और परशुरामेश्वर टेम्पल से भुवनेश्वर कथा कही माने लिंगराज टेम्पल आम भुवनेश्वर अच्छी मुक्तेश्वर टेम्पल अच्छी और परशुरामेश्वर टेम्पल अच्छी तीन टा जाक हम लिंगराज मुक्तेश्वर आमर परशुरामेश्वर Then find out the sources which tells about the history of Odisha in 1801 से कौची हमें ओडिशा रे हिस्ट्री विषय कोठु जानो जंती हमर लिटरेरी सोर्सेसटा कोन सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1801 लिटरेरी सोर्सेस केप्ट इन ओडिशा म्यूजियम बोथ आउट देछि नन त दीटा जकर हम जानो जंती सेंसस रिपोर्ट रो भी जानो जंती आउट लिटरेरी सोर्सेस रो जानो जंती त बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट हो What is an archival source of Odisha history? Archival source कौन newspaper, periodical, censor report. तीनों जाक correct अच्छे all of them. Which of the following newspapers are archival source of Odisha's history? Utkala Deepika, Utkala Darpana, Asa, all of them. All of them. In which district of Odisha have stone tools dating to the lower Paleolithic era have been discovered? तो जब आम हिस्ट्री पीरियड को देखा ताले थ्री पार्ट डिवाइड कर पालियोलिथिक मेजोलिथिक आ गोटे आम नियोलिथिक पुणी पालियोलिथिक है अपर पालियोलिथिक मिडिल पालियोलिथिक आ गोटे आम लोअर पालियोलिथिक कौन लोअर पालियोलिथिक एरार जो स्टोन टूल्स गुड़ाक ओडिशा रे कोठी फाइंड आउट होती कटक आ पुरी ऑप्शन बी है मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ संबलपुर ऑप्शन सी गंजाम एंड कोरापुट ऑप्शन डी है बालेश्वर एंड भद्रक आंसर हम गंजाम आ कोरापुट रे हमर लोअर पालियोलिथिक रो स्टोन टूल्स गुड़ाक मिल Which prehistoric sites in Odisha belongs to the upper Paleolithic period? को prehistoric site टा ओडिशा रो upper Paleolithic period को belong करे गुड़ाहांडी हिल्स बारिपदा योगी मठ none of the above तो आंसर है हमर गुड़ाहांडी हिल्स जोटा कि कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे अछि Which of the following prehistoric eras is associated with the discovery of rock carvings and paintings in Odisha? तो ओडिशा रे जो रॉक कार्विंग्स रॉक पेंटिंग गुडा कहितला सेटा को पीरियड को बिलोंग करे लोअर पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक मेजोलिथिक और नियोलिथिक तो हमर जो जत्ते सब हमर रॉक कार्विंग्स गुडा को अछि कि हमर पेंटिंग्स गुडा को अछि केव पेंटिंग्स तो सेटा सब हमर अपर पैलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करे Which prehistoric era is associated with the discovery of stone tools in Odisha? ओडिशा रे stone tools को नै prehistoric era रो stone tools discovery हेछि Paleolithic, Chalcolithic, Mesolithic, Neolithic. तो Paleolithic कोन हमरो old stone, Paleo माने हला old, lithic माने हला stone, Paleolithic माने हला old stone age, Mesolithic हला middle stone age, और Neolithic माने हला हमरो new age stone age जोटा. और Chalcolithic हला जोटा को हमें copper age कहंती जोटे copper invention हला लोक माने जानिले copper utilization कोन एटी क्वेश्चन को पचारछि which prehistoric era is associated with the discovery of stone tools in Odisha आंसर हला Paleolithic which among the following prehistoric sites in Odisha is associated with the cave paintings cave painting को नेकी को जगहटा हमर associated गुड़ाहांडी हिल्स कलाहांडी योगी मठ नियर खरियार गर्जन डोंगर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उषाकोठी संबलपुर आंसर हला हमर योगी मठ नियर खरियार जोटा हमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे आछे To which supercontinent did the landmass of Odisha once belong? Explaining the presence of Precambrian rocks in the region. Precambrian rocks टा हमरो ओडिसा रे देखा जाए सेति पय हमरो ओडिसा को को लैंडमास बोले हमें कहंती लौरासिया रोडिनिया पैंजिया गंडवाना तो जानि आंसर है गंडवाना तो सेति पय त हमरो ओडिसा रे जो तालचेर एरिया हला कि हमरो केउंझर एरिया रे कोल जो मिलुची हमर एठी गंडवाना कोल तालचेर मोस्टली हमरो गंडवाना कोल देखा जाउची गंडवाना लैंड रो पार्ट है ओडिसा What historical aspects did the excavation at Subarei in Odisha focus on? Subarei रे जो excavation हेतिला सेटा कहा ऊपर फोकस करूची medieval architecture neolithic history मुगल era आ गोटे हमरो colonial period त आंसर होबो neolithic history From which district is Odisha have rock carvings and paintings dating to the upper Paleolithic era been discovered? Upper Paleolithic era को नेकी को rock carvings आ हमरो painting गुडा को find out हेछि बौद्ध कलाहांडी जाजपुर केउंझर कलाहांडी गुड़ाहांडी जो हिल्स हमरो Which of the following prehistoric site in Odisha located in the Jharsuguda district गुड़ाहांडी हिल्स कलाहांडी योगी मठ नियर खरियार गर्जन डोंगर सुंदरगढ़ विक्रमपुर आंसर हबो विक्रमपुर Which of the following tools were discovered from Baripada in Mayurbhanj belonging to the Neolithic era? Neolithic era रो कोन मिले हमर बारिपदा रे गोटेला होज आ गोटेला चिजेल्स
What was Odisha known as in ancient time? Ancient time रे ओडिशार ना कौन थिला? गोटे मगध, कलिंग, अंग, बच्च है। तो यहाँ है आम महाजनपद पीरियड। तो ओडिशार ना थिला कलिंग। Which ancient Indian emperor fought the bloody Kalinga war in the region of Kalinga? Bloody Kalinga war. Kalinga war माने अशोकांग पीरियड 261 BC रे हमरो कलिंग war हेतला कोठी ना दयानदी रिवर पाखरे। तो ता परटू अशोका धाम नि जायतिले माने चंडाशोक धर्माशोक को कन्वर्ट कर जायतिले। तापर से वार कर नथिले। तांकर तापर तांकर जो पीरियड ता थिला से बुद्धिजीवी को प्रीच करिवारे लागिथिला। सेतिपई से तांकर गोटे स्पेशल ऑफिसर भी रखिथिले से थिले धम्म महामातस जहार काम थिला रिलीजियस पॉलिसी अफेयर्स गुडा को लोक मान को अवेयर करबा, लोक मान को बुझेबा और बुद्धिजीवी को प्रमोट करबा। According to Buddhist literature, what was the capital city of Kalinga? Buddhism according कलिंगर कैपिटल सिटी कौन थिला? दंतापुर, कलिंगनगर, उज्जैन आ गोटे हमर पाटलिपुत्र। तो आंसर हबो दंतापुर। According to Jain literature, which material was used to make the palaces of Kalinga emperors and rich businessmen? Sandstone, marble, ivory, granite. Answer है ivory. What is the name of the Buddhist literature that describes Kalinga as an independent country? Kalinga गोटे independent country थिला बोली हमें कोठु जानिबा? महागोविंद सूत्र, अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंग, उद्धरायण सूत्र। तो आंसर है हमरो मन रखि थांतु महागोविंद सूत्र। What is the name of the Jain literature that describes the palaces of Kalinga emperor and rich businessmen? को Jain literature रो आमे जानନ୍ତି जे कलिंगर पैलेस गुडाक एम्परर और रिच बिजनेसमैन को ता ऊपर डिस्क्राइब करा हिची। से हला हमरो सूत्र कृतंग। Who was responsible for the annexation of Kalinga during 4th century BC? Dhananand, Mahapadmanand, Sarbanand, Kalinganand. The answer है हमरो महापद्मानंद नंद डायनेस्टी रो रूलर थिले से। The Nanda Empire was founded in Nanda Empire केमते फाउंड हिटला 362 BC. Which of the following rulers ascended the throne of Magadha in 362 BC and integrated Kalinga to his empire? ये हमरो महापद्मानंद। Which inscription mentions about the irrigation projects undertaken by Nanda kings? Irrigation project रो कथा जतले आसीबो नंद किंग करो त हमर हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे इरिगेशन ऊपर मेंशन करा हिची। What significant artifacts found in Asurgarh in Kalahandi and Sonpur district indicate the flourishing economic condition during the time of Nanda rule? आमे कोन देखि कि जानिबा जे नंद पीरियड रे हमर केमिति इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतिला। रेड पोटरी विथ फ्लोरल मोटिव्स, black polished pottery and punchmark coins, stone sculptures of deities, और bronze statue of king. The answer of हमरो black polished potteries and punchmark coins. Which ancient site of Odisha have inscription or artifacts related to Nanda Empire been prominently discovered? उदयगिरी, खंडगिरी, कोणार्क, पुरी, रत्नगिरी, ललितगिरी, धौली और शिशुपाटगढ़। सब अछि को इंस्क्रिप्शन और आर्टिफैक्ट्स हमें नंद एम्पायर विषय जानिबा को पांती। आंसर है हमरो धौली और गोटे है हमरो शिशुपाटगढ़। What significant aspects of governance is attributed to Nanda Empire's rule in ancient Odisha? Promotion of maritime trade, establishment of educational institution, development of irrigational project, out है construction of monumental temples. से कोची नंदा एम्पायर का टाइम रे गवर्नेंस रिलेटेड आमे कोठु जानिया को पांती से हमर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल प्रोजेक्ट हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्सेस व्हाट रीजन्स वर कंट्रोल्ड बाय द नंदस? नंदस माने को एरिया को कंट्रोल करके रखि दिले ओडिसा रो सेटा हैला हमर ईस्टर्न इंडिया। During the reign of the Nanda Empire, which region comes under its domination in present day Odisha? हमरो ओडिसा कोस्टल रीजन टाको नंदा माने कैप्चर करके रखि दिले। What is the overall impact of Nanda rule on the political history of Odisha? Nanda rule ro impact है political history of Odisha रे कौन पड़ला? The Nanda introduced a centralized administration in Kalinga. The Nandas promoted economic development in Kalinga. The Nandas are credited with consolidation of Magadha Empire. आगोला हमर all of the above. तो सब गुडा का ऑप्शन करेक्ट अछि। आंसर हो all of the above. यही सब क्वेश्चन गुड़ाक ना एगुड़ा सब है रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक मैंने बार बार ओडिशा गवर्नमेंट जिते गुड़े एग्जाम कंडक्ट करी सब एमसीक्यू गुड़ाक आसी तो कोटा 2018 रे कोटा 17 रे कोटा 21 रे तो ये तो यही क्वेश्चन गुड़ाक एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपोर्टेंट। देखो नेक्स्ट है हमरो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कलिंगा आफ्टर इट वाज annexed टू मगध एम्पायर फॉलोइंग द कलिंगा वार? कलिंगा वार सरी गला परे जतबेले मगध एम्पायर अंडर को कलिंगा आसिला तो तार कैपिटल कोन हैला? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली आ गुडे हमरो तक्षशिला। आंसर हैला तोसाली।
which of the following modern edict describe the administration of कलिंग कलिंगर administration टा को edict रे हमरो आम जाना पाइले गोटे जिनस आम अशोका पीरियड को जब देखा आमको बहुत सारा रॉक एडिक्ट विषय जाना मिले जमी कलिंग वार है रॉक एडिक्ट 13 आम मेनसन होता तो सेमती मौर्यन एडिक्ट रू आम केमती जाना एडमिनिस्ट्रेशन उपर ऑप्शन है कलिंग एडिक्ट ऑफ अशोका रॉक एडिक्ट वन ऑफ द होली बोथ ए एंड बी दीटा जाक जना पड़े who founded the Mauryan Empire by defeating the last Nanda ruler Dhanananda in 322 BC जो लास्ट नंद रूलर जे थिले धनानंद तांको किए डिफीट करथिले हमरो तो आंसर हो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करथिले ड्यूरिंग व्हिच ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन डिड अशोका एंगेज इन कलिंग वार केते वर्ष राज्य शासन कला परे अशोका कलिंग युद्ध करथिले सेटा हला हमरो 8th कोरोनेशन माने 8 वर्ष शासन कला परे से कलिंग वार करथिले 261 बीसी टा मन रखिथिले How did the Battle of Kalinga impact Emperor's Ashoka's rule? जो कलिंग वारटा हैला सेटा अशोकଙ୍କ ऊपर कोन इंपैक्ट पकेला It strengthened his military power. It led to the expansion of his empire. It transformed him to adopt Buddhism. It resulted in the establishment of a new capital. तो मन रखितांतो कलिंग वार हैला पर ऑलरेडी आगु कहि साची अशोका कन्वर्ट करथिले निजको बुद्धिज्म को आपणैथिले से निजको चंडाशोकर धर्माशोकर चेंज करथिले Which edict of Emperor Ashoka describe the detail of Battle of Kalinga? Already एरा भी मागुरु कहि साची 13th rock edict रे मेंशन होइछ Kalinga war. The language of Hathigumpha inscription Ashoka's edict in the Dhaulagiri hills is classical Sanskrit, Mitanni Aryan, Pali और हैला उड्र लैंग्वेज तो जिते सब आमर थिला ना जो मॉडर्न पीरियड टाइम रे कि एंशिएंट ओडिसा रो जो हिस्ट्री जो आमर जते कि रॉक एडिक्ट्स गुडा थिला मोस्टली आमर पाली लैंग्वेज रे लिखा है What was the economic significance of Kalinga? Kalingar economic significance कौन थिला? Kalinga was a small but economically prosperous kingdom due to its overseas trade. Kalinga was known for its fertile land and agricultural product. Kalinga was a major center of mining and metalworking. आउट हैला हमरो all of the above. तो हमें आंसर रिलेटेड हमरो कोन कलिंग छोट रीजन तो थिला किंतु जेते कोस्टल रीजन थिला ता देखे हमें ओवरसीज ट्रेड करि पारुथले माने डिफरेंट से टाइम रे माने जति हम कहबा जाभा सुमात्रा मलय श्रीलंकार पुराणा ना थिला सिलोन बर्मा ये सब कंट्री मानक सहित आम ट्रेड रिलेशन एस्टाब्लिश कर पारुथले सेति सब रूलर माने चाहूले कलिंग को कैप्चर करिया पे Which prominent event in the history of Odisha is associated with the Mauryan Empire's rule? Battle of Pataliputra, Battle of Kalinga, Battle of Magadha, out here Battle of Ujjain. So obviously, Mauryan Empire Odisha established of mane sale Battle of Kalinga. King Ashoka became a Buddhist after he was horrified with the tyranny of Kalinga war. It was in तो Kalinga war केबे हेतला से क्वेश्चन करछे एटा भी ऑलरेडी आगु कहि सरछि 260 BC रे हमर Kalinga war हेतला What is the role of the Kumara, the viceroy of Kalinga? जो आमर कलिंग एम्पायर जो एस्टाब्लिश कला मगध रूल जो मॉडर्न रूल एटी चलिला कुमार कोन पे अपॉइंट करा होतले टू एडमिनिस्ट्रेट कलिंग ऑन बिहाफ ऑफ मॉडर्न एम्पायर टू कमांड द मॉडर्न आर्मी इन कलिंग टू ओवरसीज द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ कलिंग गोटे हमर ऑल ऑफ द अबव कुमार मानक एथिबे रखा होतला एज अ किंग को बिहाफ रे कोन करिवे ने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस टा को चेक करिवे नेक्स्ट है हमरो डायनास्टीज इन ओडिशा आफ्टर मौर्यन एम्पायर परे को डायनास्टी गुडा ओडिशा रे आसले ड्यूरिंग व्हिच पीरियड डिड द महामेघवाहन डायनास्टी राइज टू प्रोमिनेंस इन कलिंग बिफोर मौर्यन एम्पायर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द कुषाण एम्पायर तो हमरो मौर्यन एम्पायर सरीला परे हमर आसीतिला महामेघवाहन डायनास्टी जाको हम चेदी डायनास्टी बोली कहंती What is the other name of the Mahameghavana dynasty? Question is lineage of its founder. Kharavada dynasty, Chola dynasty, Chedi dynasty, Gupta dynasty. And the answer of one Kharavada dynasty. Who was the founder of Mahameghavana or Chedi dynasty in ancient Kalinga? Founder Kethle Mahameghavana. What does the Hathigumpha inscription reveal about Kharavada's military achievement? Conquest of the Mauryan Empire, invasion of the Chola kingdom, capture of territories from the Satyavahana kingdom, alliance with the Gupta Empire. The answer of it is capture of territories from the Satyavahana kingdom. Kharavada was the ruler of which ancient dynasty? Ko ancient dynasty ro ruler thile Kharavada. Se hela amro Chedi dynasty. During which century did Kharavada, the third ruler of Chedi dynasty, reigned? 5th century BC, 3rd century BC, 2nd century BC, 1st century BC. The answer is 1st century BC.
Which important inscription near Bhubaneswar gives most of the information about Kharavala's reign and accomplishment? पहला हमारा हाथी गुम्फा inscription. Which of the following kingdom was not defeated by Samudragupta in Kalinga? ତିଷ୍ଟାପୁର, କୋଟୁରା, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର, ଏରାଣ୍ଡପାଲା। ସେ କହିଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଉ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ଆଉ କୋଉଟା କରିପାରିନଥିଲେ ୟା ଭିତରୁ। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର। In addition to his military accomplishment, Kharavela was known for his proficiency in painting, sculpture, music and dance. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର poetry। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର music and dance। Which clans rose to power in the coastal belt of Odisha and the Bastar Koraput Kalahandi region following Samudragupta's military campaign? Matharas and Nalas, Guptas and Mauryas, Cholas and Pandyas, Pallavas and Cheras. The answer it have amara Matharas and Nalas. What is the name of the stone inscription that provides some information about the Murunda dynasty? भद्रक ऑफ महाराजा गणभद्र, हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन, जुनागढ़ इनस्क्रिप्शन, आलाबाद पिलारा इनस्क्रिप्शन। तो मन रखिथाନ୍ତୁ मुरुंडा डायनेस्टी पर हमर भद्रक ऑफ महाराजा गणभद्र एई इनस्क्रिप्शन जना पड़े। Which dynasty is associated with the rule of Utkal region of Odisha? Gupta, Murunda, Nanda, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମୌର୍ୟ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର Murunda. What is the significance of the Murunda dynasty? They were the first foreign tribe to rule in India. They were the first foreign tribe to rule in Odisha. Their stone inscription provide valuable information about the history of Odisha. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର all of the above. The answer ହେଲା their stone inscription provide valuable information about the history of Odisha. Who founded the Gupta dynasty, which existed from the mid 3rd century to 590 AD? 590 AD पहुंचा है हमारा श्रीगुप्ता। जो हमारा फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी है श्रीगुप्ता। In which year did Samudragupta led his South Indian campaign leading to the division of Kalinga into 4 principalities? यहाँ टिके बेहितला हमारा 350 AD रे। What is the legacy of King Kharavela? King Kharavela का legacy कौन? He is remarked as one of the greatest king of Kalinga. His military achievement helped to establish Kalinga as a major power in eastern India. His patronage of Jainism helped to spread the religion in Kalinga and beyond. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର all of the above. The answer ହେଲା all of the above. Who was the founder of Mathara dynasty that ruled in Kalinga region during the 4th and 5th centuries? Visakha Varman, Uma Varman, Sakti Varman, Ananta Sakti Varman. The answer is Visakha Varman. Which city served as the capital of Matharas during their rule in Kalinga region? Panchali, Bhoga, Bardhamanpur, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଦନ୍ତାପୁର। ମଠାରାଜ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଆମର ମଠାରାଜ କୋଉଟା ଡି କହିଲେ अनहित अग्रवाल। अच्छा मठारा डायनास्टी रो फाउंडर हमर हेले शक्ति बर्मन हैला। नेक्स्ट हैला हमर कैपिटल ऑफ मठारास। मठारास मानकर कैपिटल कोठी? पांचाली, भोग, वर्धमानपुर आ गोटे हमर दंतापुर हैला। तो मठारा मानकर कैपिटल होची हमर वर्धमानपुर मन रखिबे। What kind of administrative setup did the Mathara dynasty provide to the Kalinga region? Administrative setup टा कौन थिला हमर मठारा डायनेस्टी मानकर? Religious councils, territorial units such as Panchali, Bhoga and Biswa, feudal lords, military garrisons. तो आंसर के जानि जंती जति कमेंट रे जणेबे। आंसर टी होची एठी हमर टेरिटोरियल यूनिट पांचाली, भोग आ हमर बिस्व एथरे डिवाइड कराइतला। Which important ruler of Mathara dynasty extended his territory from Mahanadi to the Krishna river and shifted the capital from Sinhapur to Pistapur? Sinhapur to Pistapur को capital को change करथिले हमर हेले शक्ति बर्मन। Which of the following rules of Mathara dynasty is known for establishing a strong empire? ये मठारा डायनेस्टी को ଗୋଟେ strong empire बनेथिले सेरे भी होची हमर आंसर कोन शक्ति बर्मन। Founder of the Nala dynasty establishing 400 AD in Trikalinga region? बराह राजा, बृषध्वज, भावदत्त वर्मन और स्कंद वर्मन हैला। तो आंसर हैला हमर नल डायनेस्टी एस्टाब्लिश करथिले त्रिकलिंगा एरिया रे से हैला हमर बृषध्वज। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द नल डायनेस्टी किंगडम? दंतापुर, पुष्करी, वर्धमानपुर, सिंहपुर। नल डायनेस्टी रो कैपिटल हैला हमर पुष्करी। Which region did the Nala dynasty establish its kingdom in comprising parts of modern districts of Koraput and Kalahandi? अच्छा नल डायनेस्टी कोरापुट और कलाहांडी रो को रीजन रे हमर एस्टाब्लिश
ହେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ରିଜନ୍। Which of the following archaeological site is associated with Nala dynasty? Nala dynasty रे को archaeological sites हमरो sites गुडा हमरो added ହେଇଛି पुष्करी, दंतापुर, सिंहपुरा, वर्धमानपुर। आंसर ହେବ ଆମର पुष्करी। Nala dynasty ର capital ହେଲା पुष्करी। In which part of Odisha did the पर्वत द्वारका dynasty appear? पर्वत द्वारका dynasty कोठी appear करथिला? बेलाखंडी, नारला region of कलाहांडी, बालेश्वर district, पुरी district, गंजाम district। तो आंसर ହେବ ऑप्शन ହେଲା ଆମର ଏଠି ए। कौन ऑप्शन है? बेलाखंडी, नारला region of कलाहांडी। What was the capital of पर्वत द्वारका डायनेस्टी? पर्वत द्वारका डायनेस्टी कैपिटल कौन थिला हमरो मन रखिथांतु पर्वत द्वारका डायनेस्टी कैपिटल ही थिला पर्वत द्वारका। In which century did the Meghas establish their empire in Kosala region? 2nd century AD, 4th century AD, 6th century AD आ गोटे हमरो 8th century AD। तो आंसर हम हमरो एटी मन रखिथांतु मेघ डायनेस्टी तार एस्टैब्लिश कला रूल हमरो 6th century AD रे। According to the Puranas, how many Megha king ruled successively until the invasion of Samudragupta? Samudragupta invade करिया पर्यंत केते जण मेघ किंग हमरो एठी रूल करिथिले? आंसर ହେଲା मन रखिथांतु 9 मेघ किंग्स। The Meghas dynasty was also known as Mahamegha dynasty, Mahameghavahana dynasty, Mahendramegha dynasty ଆଉ ହେଲା none of the above। ତ आंसर ହେଲା हमरो कोन? आंसर टी होछ हमरो Mahameghavahana dynasty। Which of the following modern district of India were part of the Megha kingdom? Megha kingdom रे कोगुडा हमरो पार्ट थिला? रायपुर एंड बिलासपुर इन मध्य प्रदेश, संबलपुर, सुंदरगढ़, बलांगीर इन ओडिशा, बोथ ऑफ द अबव। ई दिटा थिला। रायपुर बिलासपुर मध्य प्रदेश भी थिला, संबलपुर, सुंदरगढ़ और बलांगीर भी थिला। कहार पार्ट? मेघ किंगडम रो पार्ट। Which of the following present day district of Odisha were part of सर्वपुरिया किंगडम? तापर आसले हमें सर्वपुरिया डायनेस्टी को। संबलपुर, बलांगीर, सुंदरगढ़, सर्वपुरिया ये तीनटा जाक जिल्ला रे हमर थिले। ऑल ऑफ दिस सब आंसर। Which present day district of Odisha were part of बिंधत्वी किंगडम? बिंधत्वी किंगडम टा हमरो ओडिसा रो को पार्ट रे थिला? मन रखिथांतो बिंधत्वी किंगडम हला हमरो केउंझर और ढेंकानाल थिला। In which century did the Naga rule over Bindhati? Bindhati मान को ऊपर नाग माने केते बडे रूल कले? 2nd century AD, 3rd century AD, 4th century AD आ गोटे हमर 5th century AD। मन रखिथांतो 4th century AD रे नागस मान एंटर कले। According to the Asanpot inscription, which ruler did the Naga king Shatrughanja defeat to establish its rule? काहा को डिफीट करी कि नाग किंग शत्रुघ्न आसानपोर्ट इंस्क्रिप्शन में मेंशन कराई कि तांकर किंगडम टा को एस्टैब्लिश कले। से होची हमर देवपुत्र। Who was the founder of the Sarvapuriya dynasty establishing the kingdom over South Kosala in 5th century AD? सर्वपुरिया डायनेस्टी को किंगडम को डिफीट करके 5th century AD रे एस्टैब्लिश कला डायनेस्टी से हमरो 1 सेकंड। नेक्स्ट है हमरो कि एटार आंसर है कोन हमरो सर्वभर्ज। वे सिटी सर्वड एज द कैपिटल ऑफ सर्वपुरिया किंगडम? सर्वपुरिया किंगडम रो कैपिटल कोटा थिला? हमरो आंसर है सर्वपुर। नेम द सर्वपुरिया रूलर हु वाज नोन एज फॉर हिज टेरिटोरियल अरेंजमेंट? टेरिटोरियल अरेंजमेंट पाई आमे काहा को जानते सर्वपुरिया किंगडम भितरे? से हला नरेंद्र। तो आमे ऑलरेडी 150 पाखापाखि क्वेश्चन कवर अप कर सालेनी। तो नेक्स्ट में विग्रह, मुद्गल, मंडल, सोमवंशी ये सब किंगडम मानकर क्वेश्चन गुड़ाक सब कंप्लीट करिया।